electrochemistry is the branch of chemistry that deals with the relationship between electricity and chemical reaction। बेटा इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाएगी थ्रू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट पैदा किया जाता है, दैट इज स्टडीड इन electrochemistry। So how we can define electrochemistry? Electrochemistry is the branch of chemistry that deals with relationship between electricity, and chemical reaction। Basically two terms are studied in electrochemistry: relationship between electricity and chemical reaction। So what type of chemical reactions are studied in electrochemistry? In electrochemistry, the electrochemistry is involves oxidation and reduction reaction। Which type of chemical reaction are studied in electrochemistry? Oxidation and reduction reaction। Keep in mind, oxidation reduction reaction are also named as redox reaction। So electrochemistry deals with which type of chemical reaction? Redox reaction, right? So we must be aware what are redox reaction। redox reactions कौन से होते हैं? As we have discussed, the reaction in which oxidation and reduction processes are involved। In redox reaction, two types of reactions take place: number one, oxidation, and number two, reduction। These two types of reaction are discussed in or involved in redox reaction। Inshallah, in next lecture we will discuss in detail what are oxidation reaction, what are reduction reaction। We will discuss them in detail in our next lecture। So what are redox reactions? A chemical reaction in which oxidation and reduction processes are involved is called oxidation reduction reaction or redox reaction। बेटा हल्का सा टच कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होगा तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर किसी रिएक्शन में किसी एलिमेंट से अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड
स्पॉन्टेनियसली, रिडॉक्स रिएक्शन या तो खुद ब खुद होते हैं, एंड व्हाट इज बेनिफिट ऑफ देयर occurring and produce electricity. Redox reaction either take place spontaneously and produce electricity, or electricity is used to derive non-spontaneous reaction. So we must be aware what are spontaneous reaction, what are non-spontaneous reaction. The spontaneous का लफ्ज़ी मतलब भी होता है खुद ब खुद. Spontaneous reactions are those which take place on their own. On their own means themselves. खुद ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होते रहते हों, these are named as spontaneous reaction. For example, burning of wood. Burning of wood. बेटा लकड़ी का जलना. देखिए बेटा जब एक बार आप लकड़ी को जला लेते हैं तो ये खुद ब खुद जलती रहती है ना. तो that is an example of spontaneous reaction. In the same way fireworks. ये बेटा जो fireworks हैं, ये जो आप पटाखे वगैरह इस तरह से बजाते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है ना, आप हल्की सी उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, फिर itself बर्निंग का प्रोसेस होता रहता है. वो जो फायरवर्क के जो पटाखे हैं वो बेटा बैठे हैं. Next, non-spontaneous reaction. As you know, spontaneous reaction take place on their own. Non-spontaneous reaction do not take place on their own. ये उनका उलट होगा. ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होंगे. इन रिएक्शंस को करवाना पड़ता है. ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होंगे. So, what are non-spontaneous reaction? Non-spontaneous reactions are those which take place in presence of an external agent. जब तक बाहर से कोई एजेंट नहीं आएगा, बाहर से कोई आपकी ऐड नहीं करेंगे, रिएक्शन नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल बेटा अगर कार्बन है, ये कार्बन है कहीं पर पड़ी है तो 200 साल तक पड़ी है तो कार्बन ही रहेगी. इफ यू ऐड ऑक्सीजन इन कार्बन then it will be converted into CO. So these reactions take place in presence of an external agent, and these reactions take place in galvanic or electrolytic cell. Excuse, the dash type of reaction occur in galvanic or electrolytic cell. These occur in galvanic or electrolytic cell. These are non-spontaneous reaction. Inshallah, we will discuss in detail what is galvanic or electrolytic cell. If we take example of non-spontaneous reaction, जो खुद ब खुद नहीं होगा. For example, electrolysis of fused sodium chloride. Fused sodium chloride means पिघला हुआ. अगर आप नमक को पिघला दें तो ऐसा नहीं होगा, उसको पिघलाने से खुद ब खुद ही वो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन में चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल ये बेटा जो NaCl है, ये इसमें से हम पिघलाने के बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फिर ये सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन बनाएगा. अदरवाइज नो. इट मीन जब तक आप एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं करवाएंगे, the reaction will not occur. So, electrolysis of fused sodium chloride produces